Okay, we are live. Hello, good evening, good afternoon. Welcome back to the Law Entrance YouTube channel. We are back with another Hindu analysis session. Today is 14th of January. Best wishes, happy wishes of Pongal and Makar Sankranti to all of you. We had Lodi yesterday, it's Pongal today, Makar Sankranti today. So, best wishes for all the festivities. Let's begin today's session. How many of you are here in the chat? How many of you are watching me live? Please give me some responses in the chat box. Priyanshi is here, K-pop is here. Good afternoon, guys. Welcome to the class. चलो थोड़ी देर और वेट करते हैं. Let more people join in, then we'll begin. Let me quickly share the presentation with you all. Okay. Here we go. That is the presentation. कितने लोग आ गए हैं चैट बॉक्स पे? वी हैव 5-6 पीपल. ओके, लो टर्न आउट टुडे. इसी क्या वजह है? बाकी लोग कहाँ हैं? लेट हो गए हैं आज बाकी लोग. चलो ठीक है. Let's begin the session by setting the agenda for the day. Let's look at the topics which we are going to unpack. Not a lot of interesting or unique topics in today's newspaper, but we'll see what we got. Firstly, on the front page, we have two articles. One is related to inflation, and one is related to the declining value of the rupee against the dollar, right? At an all-time low. So that was a big sharp fall recently. So we'll talk about both of these things, how inflation is controlled, but rupee is declining, and what are the implications, what are the consequences of both of these events or factors. Next, we have an editorial article on Trump. So Trump is going to come to power on which date? When is he going to, uh, you know, come to power, or his swearing in ceremony is on which date? We saw yesterday that Dr. S. Jaishankar would be attending his swearing in ceremony. Can you guys tell me the date? So, this editorial is basically about what would be the implications for India as well as the world now that Trump would come to power. What would that mean for India? What would be the consequences? What can be the good things? What can be the bad things? What can we expect? That is what the article is all about. We'll read about it when we go back to the newspaper. Then there is another article on mentalities. Now, mentalities में यहाँ मैंने डैश इसलिए लगाया क्योंकि आर्टिकल में भी था, एंड बेसिकली दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द मेंटालिटीज ऑफ मेन and how we need to break down barriers of toxic masculinity, how we need to teach men about respecting women, how we can ensure women's safety by sensitizing men. All of those things are covered in that particular editorial article, so we'll look at that as well. Then there is another article, an opinion article on transparency in elections. This is specifically with reference to one of the CCTV images which was caught, in which an election commissioner was doing dubious activities in order to rig the election in Chandigarh, I guess. Chandigarh का वीडियो था. तो उसी रिगार्डिंग जो क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उस बारे में है ये वाला फोर्थ आर्टिकल. एंड देन ऑफ कोर्स विल डू 3-4 न्यू वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी लाइक ऑलवेज. So that is the agenda for today, but of course we'll go to our newspaper, have a very quick overview on what do we have to study today. 20th Jan is the correct answer. Happy Pongal to you too, Agastya. Okay, Kia is also here, Vidushi is here, Agastya is here. Good afternoon, guys. Ciao. Let's begin with our newspaper discussion. I'll quickly share it on your screen. Okay, here we go. So that is the newspaper. Mahakumbh has started in UP, and around 15 million pilgrims would take the holy dip. That's a lot of people. That's 1.5 crore people, right? Yeah. So a lot of people taking the holy dip. And I was reading somewhere that this Mahakumbh also has special significance, something of the sorts of some astronomical alignment which happens one in every 144 years, something of that sort. So it's quite special in that aspect as well. Maybe you guys can read up more on it if you are interested. But yeah, a lot of people taking the holy dip. I don't know how clean that dip is, even though it's a holy dip, because Ganga
and Yamuna. All of these rivers are quite polluted as well. But okay, what you got to do, what you got to do. That's a religious ceremony. So people are free to partake in that activity. Let's talk about the front page headlines. Inflation falls to a 4 month low in December. Now, this is the headline news. Now, when we talk about inflation, there are two types of inflation which we look at, which is the CPI and the WPI, the Consumer Price Index and the Wholesale Price Index, right? So, this particular article primarily talks about the CPI, the Consumer Price Index or Consumer Price Inflation, and that has eased marginally. That means it has fallen to a 4 month low in December. That is the latest data. That means the prices of commodities have or would come down to a significant aspect, a significant bit. Then on the right hand side, you have at 86.72 dollar rupee records sharpest slide in 2 years. Now, that is also a cause of concern. You could say Nirmala Tai is saying that rupee is not falling, dollar is strengthening, which is partly true. But again, we also need to ensure that there's not a lot of decline because that has its pros and cons. अभी हम बात करेंगे रुपी की वैल्यू गिरने के against the dollar. There are pros and there are cons. We'll discuss both of them when we come back to our analysis. So let's talk more about that later. Then on the right hand side, you have PM opens the Z Motor Tunnel in J&K, silent on statehood. Now, Z Motor Tunnel is a tunnel which has been built near the Gandarbal region in Kashmir, and this would provide all-weather connectivity to the region of Sonamarg or Sonmarg, however you pronounce it. All weather connectivity to Sonmarg would mean that tourists can visit that tourist place all throughout the year 12 months क्योंकि जब स्नोफॉल पड़ती है तो रास्ता बंद हो जाता है उसको इंश्योर करेगा कि ये टनल की वैसा ना हो and along with this when the Zojila tunnel gets completed which is another tunnel in that region that would really improve the all weather connectivity between Srinagar and Ladakh. So yeah, that's pretty much it. I mean, silent on statehood का मतलब यही है कि JNK has been asking for statehood now that Omar Abdullah has come to power. But Narendra Modi ji said कि जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा. He, you know, very skillfully dodged the question. He said that when Modi makes a promise, he fulfills it. Every time has its right time. Right things will take place at the right time. So that is what he said on the statehood issue. And yeah, this is a 6.5 kilometer long tunnel built at the cost of 2,700 crore. Tunnel would make the tourist hotspot Sonmarg around the year destination, which I just told you. ठीक है जी, तो इसमें इतना ही है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. The name of the tunnel is Zedmore Tunnel. It's in the Sonmarg area of Gandarbal. ठीक है, आगे चलते हैं. India summons Bangladesh envoy defense border work. This is not that important. Delhi High Court pulls up our government. Not important. Not important. Then we have city-based news. We can skip this. Moving ahead. Okay, we're down to state-based news. Odisha signs MOU to join states part of Atal AB PM Jan Arogya Yojana. Ayushman Bharat PM Jan Arogya Yojana. This is the health insurance scheme which is run by the central government. So पहले क्या होता था उड़ीसा की अपनी खुद की स्कीम थी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस विच वाज कॉल्ड द गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना बट नाउ दे वुड कन्वर्ज दिस विद द Ayushman Bharat PM Jan Arogya Yojana. After years of resistance by then ruling BJD, which is Biju Janata Dal, Maji-led BJP government will now implement scheme in convergence with the Gopal Bandhu Jan Arogya Yojana. And for that, they have signed a memorandum of understanding. Right? So, yeah, that is the news. You need to know that this scheme of Odisha, Gopal Bandhu Jan Arogya Yojana, has merged with the Ayushman Bharat PM Jan Arogya Yojana. Okay. Then West Bengal government lapse. ये छोड़ दो इसको. 15 Kanyakumari fishermen detained near Diego Garcia. So Diego Garcia is an island which is territory of Mauritius, and it's in the southern part of Mauritius in the Indian Ocean. काफी इंडिया से आप अगर ऐसे नीचे 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 जाते जाओगे तो पहले इस साइड पर
मॉरिशस आएगा, देन मॉरिशस से भी नीचे नीचे जाओगे, सो देन यू रीच द डिएगो गार्सिया आइलैंड, विच इज यहाँ पे लिखा होगा पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। एंड इस पे भी काफ़ी डिस्प्यूट चला था डिएगो गार्सिया पे कि मॉरिशस के पास जाएगा या यूके के पास जाएगा, देन फिर इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग सेटअप हो गई थी। अर्लियर इट यूज टू बी ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरी, एंड यहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस भी है डिएगो गार्सिया में। एंड इंडियन फिशरमैन हैव बीन अरेस्टेड वहाँ पे टू for their breach of getting into international waters, breaching the maritime boundary. कल भी हम एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, बट दैट वाज रिलेटेड टू श्रीलंका। यहाँ पे श्रीलंका इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे द कंट्री विच इज इन्वॉल्व इज मॉरिशियस। ठीक है, देन काली दल नॉट इम्पॉर्टेंट, पुलिस ऑफिसर हु यूज लिरिक्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लेट्स मूव अहेड। Russia ships reactor vessel to Kundankulam 6th unit. So Kundankulam is a nuclear power project in India, one of the older ones. And वहाँ पे reactor vessel मिला है, 320 ton equipment. Okay, interesting. Puri Shankaracharya demands national status for Ganga Sagar. What is Ganga Sagar? We discussed this yesterday. Ganga Sagar is a mela which happens on which island in West Bengal? Can you guys quickly tell me the name of the island where the Ganga Sagar Mela happens? Avni is in the class. Good afternoon. कल ही हमने किया गंगा सागर मेला, द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग आफ्टर द कुंभ मेला। यस, सागर आइलैंड इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही जवाब। तो जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, इन्होंने बोला है कि इसको नेशनल स्टेटस मिलना चाहिए इस मेले को। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। नथिंग इंटरेस्टिंग हियर, नथिंग इंटरेस्टिंग हियर। सबरीमाला टेम्पल में मकार विलकू कोई फेस्टिवल है आई थिंक, हाँ इट्स अ फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के लिए लोग जा रहे हैं। सबरीमाला वाज वेरी मच इन न्यूज़ in the previous few years because of entry of people into the temple, but ठीक है, I hope you guys know the story। चलो आगे चलते हैं। Trump card, global politics and outcomes for India. This is one of the editorial which we are going to discuss today. We all know that Trump has an America first policy, which means that whatever is the most beneficial for America, he would selfishly do that. Ties with India, the line for New Delhi, will look at what the article says about India US collaboration now that Trump would come into power. Then on the left hand side, you see Indians abroad, absence of opportunities remain the main driver of migration. Absence of opportunities in India, which is resulting in the migration of Indians from India to abroad. So this is in context of the Pravasi Bharatiya Divas, which we have talked about couple of times. So इसके बारे में हम दोबारा डिटेल में नहीं जाएंगे. This is all related to the Pravasi Bharatiya Divas, which we have discussed in detail in 2 of the classes. Then you have transforming mentalities, redefining masculinity. This was what I was talking to you about. The article, there is a report by UNESCO's Transforming Mentalities Initiative, which talks about the way men engage with gender issues. So we'll talk about this when we come back to our analysis. Then this is related to Trump elections, not important. The left-hand side presidential reprieve article. Moving ahead, resisting transparency, eroding public trust. Now, this is an opinion piece. Last year, presiding officer Anil Masih was caught on CCTV manipulating votes in the Chandigarh mayor elections to help BJP secure victory. So, this is in context with that. And then they have talked about the various election rules which come into picture, which talk about CCTV footage, recordings, electoral process, and how the things should go on with respect to conducting an election. Then on the right hand side, you can skip that. That is state based news. Way forward for PM Kisan. PM Kisan is an initiative. It's a scheme which is called the PM Kisan Samman Nidhi scheme, which provides 6,000 rupees per year to farmer families in 3 installments. So this is basically to support underprivileged farmers and small and marginal farmers who don't have a lot of land holding. 2019 की ये scheme है, यहाँ पे लिखा होगा ये सब. हाँ.
Scheme was launched in February 2019, extended to all farmers who own land when NDA retained power in 2019. Basically, landless farmers के लिए थी ये, जिनकी खुद की लैंड नहीं है बट वो दूसरों के लैंड पे काम करते हैं, बट देन लैंड वाले फार्मर्स को भी इसके अंडर ला दिया गया था आफ्टर 2019. So basically talks about the scheme and its achievements, not that important for you per se. जस्ट नीड टू नो कि पीएम किसान स्कीम क्या होती है, कितने पैसे मिलते हैं उसमें, एंड कब से स्टार्ट हुई. दीज आर द थ्री थिंग्स यू नीड टू नो विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. चलो आगे चलते हैं. What led to the Azerbaijan Airlines jet crash? So इसकी हम बस जिस्ट पढ़ लेंगे, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें. Website of Azerbaijan Airlines says the airlines, which is a member of IATA, is in full compliance with the rules. Azerbaijani President Ilham Aliyev said, "We can say with complete clarity that the plane was shot down. We're not saying it was done intentionally, but it was done." Azerbaijan said that the aircraft was ordered to fly across Caspian Sea after it was denied landing at two Russian airports. They may be financially responsible for making compensation, but things get complicated if state responsibility is engaged. So, more so in a missile strike scenario. So, they are speculating that a missile has strike the airliner down. अब गलती से चली, जानबूझ के चली, that they are not sure, but they are saying that attack हुआ था. So that is pretty much it. Moving ahead, rat hole mining, practice constitute. This is not important. You can skip this. Army chief says the degree of standoff prevails along the LAC, which is the line of actual control, which is the border between India and POK. Not POK, pardon me, my bad. India and China. Aksai Chin as well as the region of Tibet. So they are saying कि अभी पूरी तरीके से de-escalation नहीं हुआ. The situation is sensitive but stable. कौन सी मीटिंग अभी recently हुई थी global leaders की, where they decided, Modi and Xi Jinping, that they would de-escalate tensions on the LAC, the line of actual control. Can you guys tell me which summit or which meeting was it happened in 2024? Where they decided that the armies which were on a constant standoff since 2020 in the Depsang Plains and the Demchok region, they would move away from the region of escalation. The BRICS summit in Kazan, Russia, absolutely correct. That is the right answer. Priyanshi and Agastya. तो मोदी एंड शी जिनपिंग मेट देयर एंड दे डिसाइडेड दैट हम डीएस्केलेट करेंगे. तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कहा है कि देयर इज स्टिल अ डिग्री ऑफ स्टैंड ऑफ एंड द सिचुएशन इज सेंसिटिव बट स्टेबल. Army's deployment is balanced and robust. On disengagement, he said, 2 rounds of verification patrolling have been completed. So yeah, that is the thing. NC mobilizes local people to attend PM rally in Kashmir. So NC is the रूलिंग पार्टी वहाँ पर, जिनकी गवर्नमेंट बनी है, उमर अब्दुल्ला जी. आगे चलते हैं. रिटायर्ड टीचर सेव फ्रॉम डिजिटल अरेस्ट थैंक्स टू बैंक स्टाफ. ओके. Eric Garrissetti's term as US ambassador comes to an end. Okay, moving ahead. Mahakumbh begins. 15 million pilgrims gather for Shahi Snan. भाई साहब क्या pollution हो रहा है तगड़ा. Is it pollution? Is it fog? Is it smog? Don't know. Seems like pollution though. Devotees from across the world gathered at Prayagraj Sangam on Posh Purnima for the first Shahi Snan of 45-day event. Okay, so yeah, there's not much to discuss here. We already discussed about the Kumbh Mela yesterday, Mahakumbh. Kumbhani Radio keeps pilgrim informed and entertained. Moving ahead, Meta CEO description of Lok Sabha election result is misinformation. Acha, okay. Okay, rupees falling as Modi government is incompetent, says opposition Jairam Ramesh. Okay. Search on for miners in Assam. So recently a tragedy happened where miners were trapped in a mine in Assam, and because of the flooding and the water being in that region, the rescue operations are happening. Navy team has exited. Patna High Court's Chief Justice Vinod Chandran appointed to Supreme Court. Okay, this is an interesting one-liner which you guys should know. Patna High Court's Chief Justice, Justice Vinod Chandran, has been appointed to Supreme Court. So that means that now the Supreme Court is again operating at its full sanctioned strength of how many judges? Maximum 34 judges, which includes
one Chief Justice as well. Who's the current Chief Justice of India? Recently appointed after Justice D.Y. Chandrachud. Can you guys tell me in the chat box the current Chief Justice of India? I think he was appointed in November, somewhere around November. Yes, Justice Sanjeev Khanna is the right answer. Absolutely correct. Okay, आगे चलते हैं. Nothing important here. Nothing important here. Stocks have been following, so if you're into the stock markets or if your parents are, tell them it's a good time to put in money, time to invest. Many of the stocks and companies are at their all-time low, 7-month low. मार्केट काफी फॉल कर रहा है. मंडे को तो बहुत मार्केट फॉल हुआ था, बहुत नुकसान हो गया मेरा, बट ठीक है, गुड टाइम टू इन्वेस्ट. चलो आगे चलते हैं. Nothing interesting here. I think we have covered more or less everything important. LF wildfire toll surges to 24 as firefighters brace for more winds. तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं ये लोग आग बुझाने की. आग बुझ नहीं रही है. Final draft of Gaza deal. Okay. UK Mauritius side progress in Chagos Island discussions. This is what I was telling you about. Chagos Island. जो डिएगो गार्सिया आपका है, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, जहाँ पे द फिशरमैन हैव बीन कैप्चर्ड, द डिएगो गार्सिया इज अ पार्ट ऑफ द चैगोस आइलैंड. Britain and Mauritius said on Monday that there had been good progress over sovereignty of Chagos Island, including a US-British military base, with London hoping for sign-off before Trump's inauguration. Britain struck a deal in October to hand over the islands to Mauritius while retaining control of the military base on Diego Garcia, the largest island of Chagos archipelago in the Indian Ocean, under a 99-year lease. So that is all you need to know about this. कि ब्रिटेन जो है हैंड ओवर कर रहा है मॉरिशस को बस मिलिट्री बेस छोड़ के ऑन अ 99-year lease. Jeff Bezos space company calls off debut launch of massive rocket in 11th hour. So इनका एक रॉकेट है 98 मीटर्स का न्यू ग्लेन करके, जिसको ये लोग लॉन्च करने वाले थे, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए जिस वजह से दे हैव पोस्टपोन्ड द लॉन्च ऑफ दिस मैसिव रॉकेट. इनकी कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन. जेफ बेजोस इज आल्सो द फाउंडर ऑफ Amazon. ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं. स्पोर्ट्स, नथिंग important. Djokovic join Alcaraz and Sinner in second round. Tsitsipas crashes out. So we're talking about the Australian Open, which we were discussing yesterday. All right. I think that's pretty much it. Nothing else. Let's come back to our analysis and we'll discuss the 3-4 articles which we had identified in our agenda. Let's go back to the slide, the presentation. Yeah. So first up, we have the two articles on the front page, which is related to the inflation and the declining rupee. अब inflation में तो देखो ज़्यादा समझाने को है नहीं. Most of you understand what inflation is and how it happens and how it is controlled. There are some things which you guys need to know as law aspirants. First of all, who decides these numbers? Who controls inflation in India? Who decides कि interest rate कितने रहेंगे banking के? Uses it as a tool to control inflation. Which is the body? Can you guys tell me the name? Which body is responsible for controlling inflation in India using different tools? Yes, Reserve Bank of India. Absolutely correct. That is the right answer. And even if you go into more specifics, we talk about the Monetary Policy Committee. The Reserve Bank of India ही govern करती है Monetary Policy Committee को. The Reserve Bank of India Act of 1934, which was amended by the Finance Act of 2016, made the MPC, the Monetary Policy Committee. And वो decide करते हैं कि क्या interest rate रहेगा, कैसे इंडिया की monetary policy function करेगी. RBI के ही 6 officials होते हैं इसमें. 3 RBI के होते हैं, 3 external होते हैं. Total 6 officials होते हैं. When we talk about the Monetary Policy Committee, चलो थोड़ा बता देता हूँ मैं आप लोगों को. So Monetary Policy Committee, formed by an amendment to the RBI Act of 1934,
The Finance Act of 2016 brought this amendment, and in the Monetary Policy Committee, you have six members, out of which three are from the Reserve Bank of India and three are external members. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. एक्सटर्नल जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, एंड इसके चेयरमैन कौन होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं? आरबीआई के जो चेयरपर्सन होते हैं वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी चेयरपर्सन होते हैं. हु इज द करंट chairman or chairperson of the Reserve Bank of India? Can you guys quickly tell me in the chat box? अच्छा, एक और चीज, इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द आइडियल इन्फ्लेशन रेट व्हिच द कमिटी टारगेट्स टू हैव? So ये although change होता रहता है parameter, but the general consensus, the basic parameter which they try to target for the CPI, which is the consumer price index based inflation, is 4% plus minus 2%. तो अगर आपसे कोई पूछे कि आइडियली इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, सो दैट शुड बी 4% विद प्लस माइनस 2%. दैट इज द आइडियल. सो अभी जो है इसके अंदर ही चल रहे हैं हम, इसके दायरे में ही चल रहे हैं. एंड इन्फ्लेशन टारगेट जो है सेट करता है सेंटर, आरबीआई से कंसल्ट करके बार बार मतलब हर 5 साल में. So for this particular period, for the period of 2021 to 2025, the inflation has to be kept in the range of 4% plus minus 2%. ठीक है. अब इसमें कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है इसका एक बहुत मेजर इंडिकेटर होता है. अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कमिटी के थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वाज सेट अप, सो उसका नाम है उर्जित पटेल कमिटी. उर्जित पटेल कमिटी के रिकमेंडेशंस के बाद द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी केम इनटू बीइंग. ठीक है. आरबीआई गवर्नर जो है इसके चेयरपर्सन होते हैं, कमिटी में 6 मेंबर्स होते हैं. ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी. अच्छा, इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है फॉर 4 years. 4 साल के लिए मेंबर्स बनते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के. दीज आर सम स्टैटिक बेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Now let's talk about the रुपी वाला एस्पेक्ट, है ना. अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि रुपी के गिरने के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं. व्हाट आर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव impacts of declining value of rupee. So can you guys think of some positive aspects of the rupee declining? आप सोचो कि पॉजिटिव क्या हो सकता है यार? रुपी की वैल्यू कम हो रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है. इसका क्या पॉजिटिव हो सकता है? हो सकते हैं इसके भी पॉजिटिव. Can you guys think of any ideas? सोचो सोचो, ट्राई टू वर्क आउट कि अगर $1 के बदले ज्यादा रुपए मिल रहे हैं तो इससे फायदा क्या होगा? Can you guys think of any ideas? Yes, absolutely. एक्सपोर्टर्स को ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा इंडिया का. एब्सोल्युटली करेक्ट. इट वुड इंक्रीज एक्सपोर्ट. क्यों इंक्रीज करेगा एक्सपोर्ट? देखो, अगर रुपी वीक है तो इसका मतलब $1 में आपको ज्यादा रुपए मिलेंगे, यानी कि $1 में आप ज्यादा सामान खरीद पाओगे. कहाँ से? इंडिया से. तो सब लोग इंडिया से ही सामान खरीदना चाहेंगे ना. मान लो दो इकोनॉमीज हैं, एक मान लो जापान है और एक इंडिया है. जापान का अगर येन स्ट्रांग है यानी कि $1 के बदले कम येन मिलेंगे, और इंडिया का रुपी वीक है यानी कि $1 के बदले ज्यादा रुपी मिलेंगे. तो यानी कि आप ज्यादा सामान खरीद पाओगे एक ही डॉलर में इंडिया से एज कंपेयर टू जापान. What would that mean? That would mean that export competitiveness in India would increase. Export would boost. जो भी हमारी export oriented industries है, जैसे the IT sector, the pharma sector, the textile sector, उनको benefit मिलेगा क्योंकि उनकी services और ज़्यादा demand में आएंगी, क्योंकि रुपी की वैल्यू कम है, आप ज़्यादा रुपी ले सकते हो डॉलर के बदले. That is one major positive impact of the rupee falling down. ठीक है, तो दोनों साइड पता होनी चाहिए आपको. सारी मीडिया में सिर्फ नेगेटिव बात होती है, रुपी गिर रहा है, बट उसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी होते हैं. मैं नहीं कह रहा गिरना चाहिए, और बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द अदर साइड. तो एक तो ये बात हो गई. ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गई? अब जैसे हम बात कर रहे थे इंडियंस अब्रॉड की, बहुत सारे इंडियंस बाहर है, रेमिटेंसेस की हम एक दिन बात कर रहे थे कि इंडिया इज द कंट्री विच रिसीव्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस. तो अगर रुपी की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब डॉलर की वैल्यू ज्यादा होगी एंड ज्यादा रुपए मिलेंगे, तो अगर रेमिटेंस आएंगे तो इंडियंस का फायदा होगा ना. मान लो बाहर से कोई $1,000 भेज रहा है, आपका कोई रिलेटिव. पहले रुपी की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू ₹60 थी, तो अगर वो $1,000 भेजता था तो आपको ₹60,000 खर्च करने को मिलते थे. बट अगर आप वो $1,000 भेजेगा तो अब आपको ₹86,000 खर्च करने को मिलेंगे. सो दैट बेनिफिट्स द फैमिलीज हु आर रिसीविंग रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, एंड दे वुड बी एबल टू स्पेंड मोर मनी इन इंडिया, एंड दैट वुड अगेन बूस्ट आवर इंडियन इकोनॉमी.
करेक्ट. सो दिस वुड एनकरेज रेमिटेंसेस कि ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसे भेजेंगे कि भाई हाँ रुपी ज़्यादा मिल रहे हैं डॉलर के बदले. देन उसके अलावा आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा. डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा. इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर पे करना है. अगर यूएस से आपको फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल आईफोन मंगाना है और यूएस से आईफोन $1,000 का आता था, अभी भी $1,000 का आता है. तो पहले 60,000 में मिल जाता था, अब 86,000 में मिलेगा बिकॉज $1,000 तो $1,000 है. तो दैट वुड इंसेंटिवाइज कि आप आईफोन इंडिया में बनाओ, है ना. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इम्पीटस मिलेगा, बूस्ट मिलेगा. बिकॉज इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा. इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए और डॉलर चाहिए तो ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे. एंड दैट इज व्हाई दिस वुड इंप्रूव डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज वेल. करेक्ट. एंड एक और फायदा अगर हम सोचे तो अनदर बेनिफिट इज दिस वुड आल्सो बूस्ट टूरिज्म इन इंडिया. इंडिया में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलेगा ना टूरिस्ट को, जो बाहर से डॉलर्स लेके आएंगे. फॉर एग्जांपल यूएस से कोई बंदा आ रहा है तो पहले अगर उसको $1,000 में 60,000 रुपीज खर्च कर पाता वो इंडिया में, अब वो 86,000 खर्च कर पाएगा. सो विच वुड मेक इंडिया चीपर डेस्टिनेशन, अ मोर अफोर्डेबल डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट. एंड दस दैट वुड इंक्रीज रेवेन्यू फॉर द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर. तो ये तो हो गए कुछ पॉजिटिव फायदे. अब नेगेटिव फायदे भी हैं, नेगेटिव फायदे नहीं मतलब नेगेटिव नुकसान भी हैं. देयर आर सम डाउनसाइड्स टू इट. व्हाट कैन बी द डाउनसाइड्स? इंपोर्ट्स की हमने बात करी, दैट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट कि इंपोर्ट्स हमारे कॉस्टली हो जाएंगे. अब इंपोर्ट्स के लिए हम कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट करना. फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल की उतनी सप्लाई नहीं है इंडिया के पास एंड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. और अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो आप समझो हर चीज महंगी होगी, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऑयल, राइट. ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो आपका फूड प्राइसेस वगैरह सब बढ़ जाएंगे. क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो आपका पेट्रोल वगैरह महंगा हो जाएगा. हाउस होल्ड बजट्स जो है बढ़ जाएंगे. दिस वुड लीड टू इन्फ्लेशन. तो कॉस्टलियर इंपोर्ट्स मींस कॉस्टलियर क्रूड ऑयल, कॉस्टलियर क्रूड ऑयल मींस इन्फ्लेशन इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. देन अगेन आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा. ट्रेड डेफिसिट कैसे बढ़ेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, एंड अगर आपको अब मान लो ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपका ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, सो दैट वुड वाइडन द ट्रेड डेफिसिट गैप, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट का. करेक्ट. देन इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मैंने आपको बता दिया. डेट सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ेगी. इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, मान लो इंडिया को $1,000 की बात करते हैं, $1,000 का डेट है इंडिया पे. तो इंडिया को अगर $1,000 रीपे करने हैं तो पहले इंडिया को 60,000 रुपए देने थे, अब इंडिया को 86,000 रुपीज देने हैं अगर वही $1,000 का डेट रीपे करना है मान लो वर्ल्ड बैंक को या आईएमएफ को. सो डेट सर्विसिंग जो है बहुत महंगी हो जाएगी इंडिया की. देन आउटबाउंड ट्रैवल, अब्रॉड ट्रैवल करना महंगा हो जाएगा. ऑन द फ्लिप साइड बाहर वाले लोगों के लिए इंडिया सस्ता हो जाएगा, बट इंडियंस के लिए अगर यूएस जाना है तो $1,000 अगर खर्च करने हैं तो 86,000 पहले जमा करने पड़ेंगे, तो 1,000 खर्च करने को मिलेंगे वहां पे. करेक्ट. सो इंटरनेशनल ट्रैवल वुड बी मोर एक्सपेंसिव, स्टडिंग अब्रॉड वुड बी मोर एक्सपेंसिव. एंड डेप्रिशिएटिंग जब रुपी होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है कंट्री में. जैसे कि अभी आप सुन रहे हो कि मार्केट्स क्रैश क्यों कर रही हैं, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स आर टेकिंग आउट देयर मनी, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन द इंडियन रुपी, दे आर टेकिंग आउट देयर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग इट समवेयर एल्स, विच सिग्नल्स की हमारी जो मैक्रो इकोनॉमी है वो उतनी स्टेबल नहीं है. इन्वेस्टर्स आर पुलिंग आउट देयर फंड्स, दिस वुड वीकन द करेंसी इवन मोर. सो ये हो गए कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स, डाउन साइड्स ऑफ द रुपी फॉलिंग डाउन. ठीक. तो ये थी बात इस मामले में. तो आगे चलते हैं. आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. देन वी टॉक अबाउट द ट्रम्प कार्ड, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड आउटकम्स फॉर इंडिया. अब ये वाला आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है? दिस इज टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन व्हिच वुड हैपन व्हेन ट्रम्प कम्स टू पावर. तो आर्टिकल सबसे पहले बात करता है अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन का. अब अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन क्या होता है? अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन सिंपली मींस कि ट्रम्प वुड do everything which puts America first rather than putting different countries on an equal pedestal, rather than honoring different treaties. आप लोगों ने शायद सुना हो शायद ना सुना हो कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जो था उससे ट्रम्प ने विड्रॉ कर लिया था. उसके बाद यूएस ने वापस ज्वाइन कर लिया था when ट्रम्प लॉस्ट पावर. अब ट्रम्प फिर से पावर में आ गया तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यूएस फिर से पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से वापस ले लेगा अपना नाम. क्योंकि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में जब आप पार्टनर होते हो तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन क्लाइमेट नॉर्म्स, यू हैव टू स्टे बाउंड विद इन द कन्फाइंस ऑफ द अग्रीमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर ट्रीटी कि आप इतने से ज्यादा एमिशन नहीं करोगे. बट अमेरिका फर्स्ट मतलब अमेरिका जितना मर्जी ज्यादा एमिशन करेगा, अमेरिका को डेवलप करना है, तो इसलिए प्राइवेट
पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से ट्रम्प हो सकता है फिर से विड्रॉ कर ले. ही इज ऑलवेज गोइंग टू फेवर बायलेटरल अग्रीमेंट्स एज अपोज टू मल्टीलेटरल, क्योंकि वहां पे सबको साथ में लेके चलना पड़ता है. बायलेटरल में आप आपस में एंगेज कर सकते हो कंट्री से कि हमारे क्या टर्म्स रहेंगे विच आर म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ द कंट्रीज, rather than taking in a lot of stakeholders which are involved in a multilateral agreement, यानी कि मल्टीपल कंट्रीज. करेक्ट. तो एक चीज तो मैं पता है कि क्लाइमेट पॉलिसी रिलेटेड जो चीजें होंगी उन पे कम एम्फेसिस होगा, दे वुड बी डाउनग्रेडेड. एंड ग्लोबल मार्केट्स में इंस्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि एवरीवन इज इन फेवर ऑफ मूविंग टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी और वो सारी चीजें. तो अब बात करते हैं इंडिया की. इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है कि अगर ट्रम्प पावर में आता है तो इंडिया का जियो पॉलिटिक्स यूएस के साथ कैसे वर्कआउट करेगा. अब दिस इज important because on one side we are also trying to counter China and US is also trying to counter China. So वहाँ पे एक दुश्मन 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 का दुश्मन दोस्त वाला एस्पेक्ट आ जाता है यूएस के साथ कि वो भी चाइना को गिराना चाहते हैं, हम भी चाइना को गिराना चाहते हैं. तो उस वजह से देयर इज अ म्यूचुअल इंटरेस्ट, देयर इज अ म्यूचुअल बेनिफिट बिटवीन द इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. अभी हमारे डिफेंस टाइज जो है इन द प्रीवियस फ्यू मंथ्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं. मल्टीपल पार्टनरशिप्स, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की हो चाहे वो डिफेंस की हो. अभी कल हम पढ़ रहे थे सोनो बॉयज हम डेवलप करने वाले हैं यूएस के साथ. सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आगे चल के किस तरीके से इम्पैक्ट होंगी. होपफुली फेवरेबली इम्पैक्ट होंगी बिकॉज ट्रम्प एंड मोदी जी गेट अलॉन्ग फेयरली वेल. ट्रेड फ्रिक्शंस जो है कुछ कुछ आ सकते हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कुछ कुछ लग सकते हैं जो ईज आउट हो गए थे ड्यूरिंग द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बट विल सी हाउ दैट हैपेंस. बट टॉकिंग अबाउट द चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड काउंटरिंग द चाइनीज इन्फ्लुएंस, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्वाड ग्रुपिंग को ज्यादा एम्फेसिस देगा. क्वाड ग्रुप में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 4. विच आर द 4 कंट्रीज इन द क्वाड security dialogue or the quad grouping? Can you guys tell me the name of the 4 quad countries? 4 क्वाड कंट्रीज के नाम मुझे बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से. यस करेक्ट. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान, दीज आर द 4 क्वाड कंट्रीज. तो क्वाड जो इनिशिएटिव है उसके स्ट्रेंथन होने की उम्मीद है. उसके अलावा इंडिया के लिए फ्रॉम अ इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव थिंग्स आर लुकिंग गुड, फ्रॉम अ एनर्जी पर्सपेक्टिव थिंग्स आर लुकिंग गुड बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली डाइवर्सिफाइंग आवर एनर्जी रिसोर्सेज. वी आर नॉट जस्ट solely reliant on China now, and because US is also sort of anti-China to some extent, यूएस कैन हेल्प अस आउट विद क्रिटिकल एनर्जी सोर्सेज, क्रिटिकल मिनरल्स जिनका हमारा टाई अप ऑलरेडी हुआ है ही. तो बेसिकली ऑल इन ऑल थिंग्स आर लुकिंग फेवरेबल फॉर इंडिया. जस्ट लिविंग अस आउट असाइड द ट्रेड वाला एस्पेक्ट एंड द visas wala H1B visas and migration wala aspect, because Trump is not very much in favor of having a lot of immigrants. Correct. सो वो 2 चीजें अगर हम साइड रखें तो उसके अलावा बीट डिफेंस, बीट स्ट्रैटेजी, बीट एनर्जी, बीट मिलिट्री कोऑपरेशन, बीट काउंटरिंग चाइना, इन सारी चीजों में थिंग्स आर लुकिंग फेवरेबल फॉर इंडिया एज अ कंट्री व्हेन ट्रम्प कम्स टू पावर, एंड दैट इज व्हाट द आर्टिकल ऑल्सो टेल्स यू. आप लोग पढ़ सकते हो, ये आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है. आई वुड रिकमेंड दैट यू गाइस रीड दिस आर्टिकल इफ यू हैवंट येट. Moving ahead, transforming mentalities, redefining masculinity. अब ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. यहाँ पे काफी सारे इनिशिएटिव्स, काफी सारे चीजों की बात करी गई है. सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस हमने सेलिब्रेट किया था 25 नवंबर को. बट डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स विमेन सेफ्टी एंड विमेन एम्पावरमेंट एंड रिड्यूसिंग वायलेंस परपेट्रेटेड बाय मेन, अभी भी ऐसा ही है सिनेरियो कि men are more often the perpetrators and women are more often the victims. And in order to bring about a significant change in the scenario, you have to sensitize men, you have to redefine the role of men, you have to redefine how masculinity is defined. अभी अगर आप देखो either in the global society or in the Indian society, masculinity, how do you attribute masculinity? How do you say ki someone is masculine or someone is manly? What are the attributes which define masculinity? You usually associate it with strength, you associate it with aggression, you associate it with authority and control. But
This article advocates that in order to bring the scale of balance to a healthy position, you need to redefine these masculinity based definitions and replace these strength, aggression, violence sort of things with equality, empathy, non-violence as alternative notions of manhood. That a person is manly when he speaks for equality, when he speaks for feminism, not the pseudo feminism, when he speaks for empathy, when he speaks for non violence, rather than perpetrating violence, right? Rather than brash display of strength and all of those things. So, violence against women, they say that that is primarily a men's issue rather than a women's issue, where there is more active engagement of men contributing to that issue rather than women contributing to that issue. इसमें एग्जाम्पल्स भी देते हैं ये लोग काफी इंटरेस्टिंग कि बचपन से men are conditioned in such a way, they are influenced in such a way which tells them that being having a lot of strength means having a lot of dominance, and showing emotions or feeling emotions is a sign of weakness, crying is a sign of weakness, and asserting control is a way of elevating their status. So that is what they say we need to uproot these deeply entrenched ideas that are detrimental to the notion of equality, the notion of women empowerment, and also improve the emotional health and lives of men who are living with a lot of suppressed emotions, who are living with a lot of suppressed you call it anger, call it angst, call it guilt, whatever you may call it, because they cannot express their emotions, they cannot talk freely, they cannot be vulnerable. Men are also suffering mentally and emotionally, which is detrimental to creating a healthy relationship, be it with family, be it with their loved ones, or be it प्रोफेशनली, करेक्ट? अब इसमें ये लोग काफ़ी सारे इनिशिएटिव और रिपोर्ट्स की भी बात करते हैं. दे टॉक अबाउट द यूनेस्कोज ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज इनिशिएटिव विच इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, जेंडर इश्यूज एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू transforming men and their mentalities by breaking these stereotypes, breaking these rigid ideas of masculinity. एंड बेसिकली यही बात करते हैं, घूम फिर के ये लोग बार बार उसी पे आते हैं कि men need to take control of their ideas of what masculinity is and play a transformative role in making a more just society, a more equitable society, a more women friendly society. So that is what the article is about. A very good article. You should definitely read this and definitely implement this as well if you are a man. So yeah, अच्छा article, good article. Yeah, that is what it is about. पढ़ सकते हो आप इसको. Next, we have resisting transparency and eroding public trust. Now, this article, as we were reading, is in context with the Chandigarh wala fiasco, which happened where an election officer, was caught manipulating the electoral rolls in the Chandigarh mayor elections. तो ये लोग बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक अमेंडमेंट लेके आई थी इलेक्शन रूल्स में, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 टू बी स्पेसिफिक. एंड व्हाट वाज दैट अमेंडमेंट? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961. अब इसमें 93 क्लॉज 2 का अमेंडमेंट आया था, रूल 93(2), which talks about how election proceedings should be done. And the amendment came days after Punjab and Haryana High Court ने डायरेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन को कि इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको सीसीटीवी फुटेज वगैरह की, जो भी असेंबली इलेक्शंस होंगे पंजाब हरियाणा में. अब रूल 93 क्या कहता है? रूल 93 बेसिकली प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर पीपल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्शंस. तो एक तरीके से इन अ वेरी बेसिक सेंस यू कुड कॉल इट एन आरटीआई स्पेसिफिक टू इलेक्शंस, राइट? कि आप कैसे, आपको पता चलेगा कि इलेक्शंस फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहे हैं कि नहीं. So this basically stated that other than the records which are specifically exempted, all papers which are related to elections, all the documents related to elections should be in public domain, should be available to public to inspect and take copies as well.
अब ये जो अमेंडमेंट आया रूल 93(2) में, इसने स्कोप को थोड़ा सा नैरो कर दिया ऑफ पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक क्वालिफिकेशन ऐड करके कि ओनली वही पेपर्स विच आर स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स रिलेटिंग टू इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, यानी कि सारे पेपर्स नहीं अवेलेबल होंगे, कुछ स्पेसिफिक पेपर्स जो इन रूल से कोरिलेट करते हैं वही पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होंगे। एंड जो फॉर्म 17C अंडर दीज रूल्स आता है which talks about video recordings and CCTV footage will potentially be stuck somewhere in this amendment कि क्या वो परव्यू में आएगा या नहीं आएगा, क्या वीडियो रिकॉर्डिंग्स या सीसीटीवी फुटेज पब्लिक डोमेन में माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। सो इसीलिए ये आर्टिकल बात करता है कि वी नीड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी and keep all of these things in public domain in order to ensure कि public का trust और participation electoral process में increase हो, क्योंकि if things are smooth and transparent people would believe that there is no ghapla which is happening, and election commission of India and the state election commissions have to step up and take responsibility in order to safeguard the rights of people under the Representation of People Act of 1951, which talks about the misuse of power in the rules and which talks about the role of election commission in ensuring a free, smooth and transparent election. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो आपको पावर्स देता है, जो आपको राइट देता है वोट करने का, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ानी है तो वी नीड टू इंश्योर कि पब्लिक ट्रस्ट करे, प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, एंड उसके लिए वी नीड टू मेक मैक्सिमम थिंग्स इन द पब्लिक डोमेन। दैट इज व्हाट द आर्टिकल essentially talks about। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल है, गुड आर्टिकल, you should definitely read this one as well। So that brings us to the end of our analysis aspect of today's newspaper। 1 2 3 and 4 आर्टिकल्स हमने एनालाइज कर लिए, समझ लिए। अब देखते हैं आज की वोकैबुलरी। द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड ऑफ द डे इज इरिडिसेंट। इरिडिसेंट का मतलब होता है showing luminous colors that seem to change when seen from different angles। Shimmery, glittering, colorful। Her latest fashion collection features shimmering iridescent materials। ठीक है जी, तो दैट इज वन वर्ड। नेक्स्ट वी हैव रिसुसिटेटेड। रिसुसिटेटेड का मतलब होता है किसी मुर्दे में जान डाल देना। आपने वो देखी होगी मशीन्स जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, ऐसे ऐसे पहले उसको जेल रब करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर बंदे में ऐसे ऐसे जान आ जाती है। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ रिसुसिटेशन मशीन वेयर you use it to revive someone from unconsciousness or apparent death. So that process is called resuscitation, and doing that process is resuscitated, bring back, revived, refreshed। Antonyms are deadened, enervated तो नहीं होगा, just deadened। His heart had stopped, but the doctors successfully resuscitated him, right? So that is the word। Then the third word is pestilent। Pestilent means likely to cause or capable of causing death, something which is deadly, harmful, lethal, fatal. You can call it pestilent as well। Antonyms are salubrious, beneficial, salutary। Smallpox is a pestilent disease। Pestilent मतलब can cause death, resuscitated मतलब revive from apparent death, and iridescent means shiny, shimmery, glittering। These are the three words for the day, and that brings us to the end of today's session। Thank you so much for participating। I'll see you all in the next one tomorrow। Till then, keep learning, keep preparing। Signing off. Thank you so much।